हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे HPCL 2026 के जो रिक्रूटमेंट है मैकेनिकल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का आज हम यहाँ पे टॉपिक 19 कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अपन कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए मैकेनिकल के लिए शॉर्ट नोट प्लस MCQs PDF अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है कैड प्राइमरी स्टैंड फॉर। तो कैड मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग प्रोडक्ट यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग। नेक्स्ट सेकेंड CAM मेनली डील्स विद, CAM मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ओके। एक ऑप्शन है फर्स्ट प्रोडक्ट डिजाइन, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल यूजिंग कंप्यूटर, थर्ड मार्केटिंग एंड फोर्थ क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल यूजिंग कंप्यूटर बिकॉज CAM यूज कंप्यूटर सिस्टम टू कंट्रोल मशीन टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट थर्ड CNC मशीन आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखो ऑप्शन है फर्स्ट मैनुअल सिस्टम, सेकंड ऑटोमेशन सिस्टम, थर्ड प्योरली मैकेनिकल सिस्टम एंड नॉन प्रोग्रामेबल सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑटोमेशन सिस्टम। CNC that is computer numerical control, okay, is a machine are automated and program system. Next fourth in automation feedback control means। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ओपन लूप सिस्टम, सेकंड सिस्टम विदाउट सेंसर, थर्ड आउटपुट इज मेजर्ड एंड करेक्टेड एंड फोर्थ नो मॉनिटरिंग। तो करेक्ट आंसर है थर्ड आउटपुट इज मेजर्ड एंड करेक्टेड बिकॉज फीडबैक सिस्टम मेजर आउटपुट एंड एडजस्ट इनपुट टू मेंटेन डिजायर्ड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कैड। तो एक ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज मैनुअल एफर्ट, सेकंड रिड्यूस डिजाइन एक्यूरेसी, थर्ड इजी मॉडिफिकेशन एंड डिजाइन एंड फोर्थ हायर ड्राइंग एरर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड इजी मॉडिफिकेशन ऑफ डिजाइन बिकॉज CAD allow quick editing, simulation and improve accuracy. Next sixth CAM is mainly used for। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिजाइनिंग कंपोनेंट, अभी देखा अपन ने मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल एंड टूल्स पाथ जनरेशन, अकाउंटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल एंड टूल पाथ जनरेशन बिकॉज इट जनरेट टूल पाथ एंड कंट्रोल मशीनिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट सेवंथ न्यूमेरिकल कंट्रोल मींस NC मशीन आर कंट्रोल बाय। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पंच टेप और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सेकंड हैंड टूल, थर्ड मैनुअल ड्राइंग एंड फोर्थ हाइड्रोलिक प्रेशर ओनली। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट पंच टेप और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बिकॉज ट्रेडिशनल NC मींस न्यूमेरिकल कंट्रोल यूज पंच टेप, मॉडर्न वर्जन यूज कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट एट FMS स्टैंड फॉर। तो FMS मतलब होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ओके। इट अलाउज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट विथ मिनिमल सेटअप चेंजेस। नेक्स्ट नाइन्थ इन ऑटोमेशन एंड ओपन लूप सिस्टम। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट यूज फीडबैक, सेकंड इज मोर एक्यूरेट, थर्ड हैज नो फीडबैक एंड फोर्थ इज सेल्फ करेक्टिंग। तो करेक्ट आंसर है थर्ड हैज नो फीडबैक बिकॉज ओपन लूप सिस्टम डू नॉट कंपेयर आउटपुट विद डिजायर्ड वैल्यू। नेक्स्ट वैसे देखें इंग्लिश ग्रामर के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंथ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इंप्रूव। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एरर, स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, कॉस्ट, मैनुअल एफर्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी बिकॉज फीडबैक रिड्यूस एरर एंड इंप्रूव प्रिसीशन। नेक्स्ट 11th which software is commonly used for 3D modeling in CAD। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्प्रेडशीट, सेकंड वर्ड प्रोसेसर, थर्ड सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस ओनली। तो करेक्ट आंसर है थर्ड सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज अ टूल आर यूज्ड फॉर 3D डिजाइन एंड सिमुलेशन। नेक्स्ट 12th ऑटोमेशन मेनली एम्स टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज मैनुअल वर्क, सेकंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, थर्ड इंक्रीज एरर एंड फोर्थ इंप्रूव इफिशियंसी एंड कंसिस्टेंसी। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ
improve efficiency and consistency because automation reduce human intervention and improve quality and speed. Next 13, robot in manufacturing is an example of, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मैनुअल सिस्टम, सेकंड फिक्स ऑटोमेशन, थर्ड प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एंड फोर्थ प्योर मैकेनिकल सिस्टम. तो करेक्ट आंसर है थर्ड प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन बिकॉज इंडस्ट्रियल रोबोट कैन बी रीप्रोग्राम फॉर डिफरेंट टास्क. Next 14, which of the following is a benefit of CIM means computer integrated manufacturing. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट आइसोलेटेड डिपार्टमेंट, इंटीग्रेटेड डेटा फ्लो, मैनुअल कम्युनिकेशन एंड इंक्रीज डिले. तो करेक्ट आंसर है सेकंड इंटीग्रेटेड डेटा फ्लो. ओके, बिकॉज इट इंटीग्रेटेड डिजाइन प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग कंप्यूटर. नेक्स्ट 14, टूल पाथ जनरेशन इज परफॉर्म इन. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कैम, कैड, accounting software, ERP only. तो correct answer है first CAM because CAM software generate machining tool path for CNC machine. Next 16, direct numerical control DNC refers to. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मैनुअल ऑपरेशन, सेकंड सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोलिंग मल्टीपल मशीन्स, थर्ड सिंगल मशीन कंट्रोल ओनली एंड फोर्थ मैकेनिकल सिस्टम. तो करेक्ट आंसर है सेकंड central computer controlling multiple machines. DNC use central computer to control several CNC machines. Next 17, which component is essential in automation system. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेंसर, पेंट, ड्राइंग बोर्ड, स्केल. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेंसर. सेंसर मेजर पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, स्पीड, पोजीशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट 18, PLC स्टैंड फॉर. PLC मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. ठीक है, इट यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फॉर कंट्रोलिंग प्रोसेस. नेक्स्ट 19, इंटीग्रेशन ऑफ कैड एंड कैम मेनली रिड्यूस. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिजाइन एक्यूरेसी, मशीन इफिशियंसी, डेटा स्टोरेज एंड प्रोडक्शन टाइम. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ प्रोडक्शन टाइम बिकॉज CAD CAM integration speed up transition from design to manufacturing. Next 20, which of the following is not a part of CIM. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट CAD, CAM, मैनुअल ड्राफ्टिंग एंड ऑटोमेशन सिस्टम. तो करेक्ट आंसर है थर्ड मैनुअल ड्राफ्टिंग बिकॉज CIM is a fully computer integrated, मैनुअल ड्राफ्टिंग is not a part of it. ओके, ऐसे देखें मैकेनिकल के लिए PDF अवेलेबल है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड PDF अवेलेबल है एंड इंग्लिश ग्रामर. जिनको भी PDF चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.